अस्सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड नुक्ता का वीकली शो जिसे हम एक इशू पर डीप डाइव करते हैं बेस्ड ऑन फीडबैक एंड कमेंट्स फ्रॉम द नुक्ता ऑडियंस। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर के ऐलान को कुछ रोज गुजर चुके हैं, बट द फॉल आउट कंटिन्यूज। इंडिया में द रिस्पॉन्स हैज बीन मिक्स्ड। एक तरफ सेलिब्रेशन, एक तरफ सवाल। 10 मई को एक सीज फायर की, एक युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है और ये घोषणा भारत नहीं करता, ये घोषणा भारत की सेना नहीं करती, ये घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नहीं करते, ये घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं और वो भी सोशल मीडिया पर। और आधे घंटे बाद चुपचाप भारत कहता है कि हाँ ये सही है, सीज फायर हो गया है। कैसे हुआ ये सीज फायर? क्या हमें सिंदूर का बदला मिल गया? और पाकिस्तान में मूड बाय एंड लार्ज जीत का है, लेकिन अब गेन्स और लॉसेस के जायजे के बाद एक और सवाल उठाना जरूरी है। इसके बावजूद कि हॉट वॉर या इमीडिएट डेंजर खत्म हुआ है, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी खोटी नीयत का ऐलान भी किया है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ये एक अनईजी पीस नहीं है। द फ्यूज इज स्टिल बर्निंग। इस खतरे को समझने के लिए बात करते हैं पाकिस्तान की फॉर्मर डिप्लोमेट टू द यूके, यूएस एंड यूएन मलिहा लोधी से। पहले तो मलिहा साहिबा, सवाल जो मैं करना चाहूँगी, सीज फायर के बाद जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना पहला एड्रेस किया टू द नेशन, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक डिफरेंस क्रिएट किया कि जब भी इंडिया में कोई भी दहशतगर्द हमला होगा तो वी विल नॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन द टेररिस्ट मास्टरमाइंड्स एंड अ स्टेट और अ गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए था या वाकई पाकिस्तान नीड्स टू बी ऑन हाई अलर्ट फॉर एनी फर्दर एडवेंचर्स? देखिए, प्राइमरीली जो थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीर, वो एम थी डोमेस्टिक ऑडियंस, इसलिए कि वहाँ बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उनकी हुकूमत से, बल्कि जो उनकी राइट विंग बेस है, सपोर्ट बेस, वो तो बहुत ही नाराज़ है। और शिवसेना ने तो ये भी कहा है कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए है और ये एक नेशनल एम्बैरसमेंट थी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि भारत डिवाइडेड है और सियासी तौर पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उन सवालों के ही जवाब में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान इसको सीरियसली ना ले। मेरा ख्याल है हर चीज़ अगर आती है एक ऐसे मुल्क से जिसने पाकिस्तान पे हमला किया था, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा 4 दिन में, तो जाहिर है हमें भी सोचना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो क्राइसिस था और उसका जो नतीजा निकला या आउटकम था, उससे तो ये ज़ाहिर हो गया है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक मिलिट्री सोल्यूशन को अप्लाई करने की कोशिश की है, और ये इससे बात बनी नहीं, वो बैकफायर किया है। इसलिए कि उन्होंने हमला ज़रूर किया और वाकई डीप इनटू पाकिस्तानी टेरिटरी, लेकिन पाकिस्तान का जवाब जो था उससे बहुत डैमेज हुआ है मिलिटरीली और हवाले से भी, सियासी तौर पे, जैसे मैं अभी भी कह रही थी। तो मैं नहीं समझती इतना आसान होगा उनके लिए। ये रोज़ाना कोई ना कोई इंडियन एनालिस्ट लिखता है कि जी नई डॉक्ट्रिन आ गई है, न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश हो गया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी वो अल्फाज इस्तेमाल किया कि मैंने इस्टेब्लिश कर दिया न्यू नॉर्मल। मेरा ख्याल है न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश हो गया है, मगर वो नहीं हुआ जो भारत चाहता था। मलिहा साहिबा, इसी पर मैं जो सवाल करना चाह रही थी वो यही था कि एक और बात उन्होंने कही थी कि वी विल नॉट टॉलरेट, या हम कबूल नहीं करेंगे न्यूक्लियर ब्लैकमेल। आपको लगता है कि पाकिस्तान हैज़ री एस्टैब्लिश्ड द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड? मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो इस्टेब्लिश किया वो अपनी कन्वेंशनल डिटेरेंस को किया है, तो उसमें तो न्यूक्लियर का ताल्लुक ही नहीं, इट डजंट रियली कंसर्न। न्यूक्लियर फैक्टर को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी
اپنے جو جوابی کارروائی تھی کنونشنل لیول پہ ظاہر ہے ساری تھی، اسی سے ثابت کر دیا کہ کنونشنل ڈیٹرنس نہ صرف ری اسٹیبلش ہوئی ہے بلکہ میں سمجھتی ہوں انہینس ہوئی ہے. دیکھیں یہ پہلی آپ کہہ سکتے ہیں ملٹری کانفرنٹیشن تھی دونوں ملکوں کے درمیان جب سے وہ نیوکلیر ویپن اسٹیٹس بنے ہیں، میں کہ دونوں سائڈس نے ہائیبرڈ وارفیئر کے مختلف ہتھیار استعمال کیے، ماڈرن وارفیئر کے، جس میں کہ آپ نے دیکھا نہ صرف میسائلز مگر ڈرونز، پھر جو ایئر ڈیفنس سسٹمز، مختلف اور یو اے ویز. تو یہ ایک بہت ہی یعنی کہ کمپلیکس قسم کا ایکسچینج تھا، لیکن اس میں یہ بھارت کی جو اسٹریٹجک ڈومیننس ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکی جو ان کا ایم تھا. اوکے، اسٹریٹجک ڈومیننس نہیں اسٹیبلش کر سکے. آئی وانٹ ٹو سورٹ آف کم بیک ٹو اگین ہز ایڈریس. پرائم منسٹر مودی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹیرر اینڈ ٹریڈ ٹاکس کی ناٹ ہیپن ٹوگیدر، اور لگتا یہ ہے کہ وہ جو حوالہ دے رہے ہیں یو ایس یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا کہ میں نے تو یہ تھریٹن کیا تھا کہ اگر آپ اس کو سیٹل نہیں کریں گے تو آپ کے لیے ہم جو تجارت کرتے ہیں آپ کے ساتھ اس کو ختم کر دیں گے. سو ہو ڈو وی ٹیک مور سیریسلی، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یا پرائم منسٹر مودی؟ دیکھیں الفاظ تو استعمال ہوتے ہیں لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایکشنز کیا ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بہت جلدی کسی قسم کا ڈائلاگ شروع ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو اس حد تک تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے. فارمل ڈائلاگ پچھلے 12 سال سے سسپینڈڈ ہے. دوسرا بیک چینل جو تھی 2021 میں وہ بھی بہت سالوں سے ہے ہی نہیں. سو اس طرح کی کوئی کمیونیکیشن دونوں سائڈس کے درمیان ہے ہی نہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ پرائم منسٹر مودی کا یہ کہنا کہ جی ٹاکس اینڈ ٹیرر کانٹ گو ٹوگیدر، ٹاکس اینڈ فلاں کانٹ گو ٹوگیدر، نتھنگ نیو ریئلی، کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے وہ، اس لیے کہ وہ پہلے سے بھی یہ کہہ چکے ہیں اور کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. اینڈ پاکستان از لیوڈ وداؤٹ دیٹ ڈائلاگ. تو کوئی وہ احسان نہیں کر احسان نہیں کرے. جسٹ آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن میں یہاں سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ کو نہیں لگتا کہ ٹو ڈینگلنگ دا کیرٹ آف ٹریڈ وڈ میک اینی ڈفرنس ٹو انڈیا؟ وہ پاکستان سے بات چیت نہیں کریں گے؟ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بات چیت شروع ہوگی. اور امریکہ کی طرف سے میرا خیال ہے پتہ نہیں کس حد تک کوشش ہوگی. دیکھیں جہاں تک کرائسس کو ڈیفیوز کرنے کا تعلق تھا وہاں تو امریکہ ظاہر انگیجڈ ہوا اور ان کی سسٹینڈ انگیجمنٹ تھی تھرو آؤٹ دا کرائسس. انہوں نے کوشش بھی بلکہ کی کہ کرائسس کسی طرح سے ٹل جائے before the crisis actually broke. لیکن اب امریکہ کے پاس اور اتنا کچھ ہے اپنے ایجنڈا پہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس حد تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن انگیجڈ رہے گی ہمارے خطے میں، اور کس حد تک وہ اپنا پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک کیپٹل جو ہے وہ اسپینڈ کرے گی ٹو گیٹ اے ڈائلاگ گوئنگ. مجھے کوئی خاص اس کے آثار نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب پانی کے معاملے پہ آتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے نوتا کے آڈینس کے کنسرنز اور کامنٹس بھی دیکھنے میں آئے ہیں. میں ایک آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ اینڈ جسٹ گوئنگ بیک ٹو دا ٹریڈ ایشو، جس میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ انڈیا نے ہی امریکہ کو اپروچ کیا ہوگا فار اے سیز فائر، کیونکہ ٹریڈ از ویری امپورٹنٹ ٹو دیم ویزا وی یو ایس. یہ ایک سوال ہے یا ایک کامنٹ ہے فرام اے نقطہ آڈینس ممبر. وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ؟ دیکھیں امریکہ خود انگیجڈ ہوا تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ صورتحال جو ہے وہ ہاتھ سے نکل سکتی ہے دو نیوکلیر ویپن اسٹیٹس کے درمیان، تو وہ خود انگیج تھے. اور ایک ایسا وقت آیا جب انہوں نے بہت آئی سپوز آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹینسیفائی کیا اپنا پریشر کہہ لیجئے یا انگیجمنٹ کہہ لیجئے دونوں سائڈ سے. دونوں کو سٹیپ بیک کرنا پڑا فرام دا برنک ایز اٹ ور. لیکن اب بھارت روز کچھ نہ کچھ نئی چیز کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جی امریکہ کا کوئی رول ہی نہیں تھا، پھر وہ فون کالز کیوں لے رہے تھے؟ اگر رول نہیں تھا تو وہ فون اپنے بند کر دیتے. تو کبھی روبیو کا فون جا رہا ہے، کبھی وائس پریزیڈنٹ وینس کا جا رہا ہے. تو ان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے تو کہا ہے کہ جی کوئی رول نہیں تھا کسی باہر کی پار کا، اور یہ سیز فائر بلکہ پاکستان کے کہنے پہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے تھے سیز فائر تو نہ کرتے. کسی نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا نا.
So, I mean, it was in the interest of both countries to have a ceasefire. And then there was a ceasefire. Otherwise, हो नहीं सकता ना. I also want to get your read on अभी जो in fact ये कुछ दिन पुरानी है क्लिप लेकिन दोबारा से सर्कुलेट कर रही है वर्ल्ड बैंक के सदर का जो स्टेटमेंट भी आया है पानी के मामले में और उनका कहना था कि ये हम इसको we can't fix this problem, we're not going to fix this problem, ये हमारा काम नहीं है, हम सिर्फ एक सहूलतकार बन सकते हैं. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. The World Bank's role is basically that of a facilitator if they disagree. इंडिया एक तरफ इसको उछाल रहा है, पाकिस्तान का ख्याल है कि हमारे मौक़िफ़ की जीत है. What's your read? I think the World Bank president should have been a little more careful in his public remarks. ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है. पाकिस्तान की तरफ से तो आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत पानी बंद करने की कोशिश करता है तो ये पाकिस्तान will see that as a declaration of war. So it's a very serious matter. और उस हवाले से मैं समझती हूँ कि बेहतर होता कि ये पब्लिकली फिलहाल कुछ ना कहते. They should have waited to see if Pakistan approached them. Pakistan has yet to approach. Pakistan has been involved in the crisis. तो अब पाकिस्तान अपने मुख्तलिफ लीगल एंड अदर ऑप्शंस को एग्जामिन कर रहा है और फिर हम देखेंगे कि क्या पाथ पाकिस्तान अडॉप्ट करता है टू गेट दिस गोइंग एंड टू गेट अ कमिटमेंट फ्रॉम द इंडियंस. मगर एक चीज जो पब्लिक में नहीं आई और वो है कि अमेरिका ने अपने मुख्तलिफ कम्युनिकेशन जो उन्होंने की विद द इंडियन गवर्नमेंट तो उन्होंने तो कहा इंडिया को कि abide by and observe the Indus Water Treaty. तो अगर भारत की ये तवक्को थी कि उनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी फॉर सस्पेंडिंग द ट्रीटी और अपने स्ट्रेटेजिक एलाय अमेरिका से भी बैकिंग मिलेगी तो वो तो नहीं हुआ. तो वो भी फिर भारत को कंसिडर करना पड़ेगा जब इस पे कोई बातचीत शुरू होगी या जब पाकिस्तान किसी किस्म के लीगल रिकोर्स की तरफ जाएगा. ठीक है. एंड माय लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है एंड particularly ड्यूरिंग दिस क्राइसिस एज वेल कि इंडिया इज़ द अग्रेसर स्टेट. उन्होंने हमारे हार्टलैंड में हमला भी किया है. वी आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग, वी वांट पीस. ये जो मैसेजिंग है, हाउ डू यू थिंक इट प्लेड आउट इन द इंटरनेशनल मीडिया? I think it played out reasonably well. I think some of our ministers did very poorly, frankly. There were contradictory statements and really poor delivery, poor communication. मगर उसको अगर आप एक तरफ रख दें, overall, I think Pakistan's international stock has gone up. Conversely, India's international reputation has suffered. It's been damaged. So उस हवाले से मैं समझती हूँ कि international media में भी जो तज्जिया comments आ रहे थे उसमें Pakistan was seen as a country that was at the receiving end of India's aggressive acts, and then the media focused on how Pakistan responded, and therefore it was a mistake on India's part to take Pakistan's conventional capability so lightly. जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, Pakistan was able to re-establish conventional deterrence. मलिहा लोधी साहिबा को तो हमने सुन लिया, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते इंटरनेशनल कवरेज में मैंने कुछ ट्रेंड्स नोटिस किए थे, उस पर बात करते हैं. जैसे पियर्स मॉर्गन, जिनका करियर हमारे कुछ सहाफ़ियों की तरह मेन स्ट्रीम टीवी से यूट्यूब पर शिफ्ट हो गया है विद हिज शो पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड. जब हमारी फॉरेन मिनिस्टर ने माजी का हवाला दिया तो उन्हें रोक दिया गया. इंडियन जर्नलिस्ट को नहीं रोका. As it did in the case of Canada, which we know has been, India has been found, with their red-handed. Okay, but let me ask you a question. People. I mean, So out of interest, let me ask you a question though. How should India have responded to the murder of 27 of its people? Why are you not asking me the question? How should Pakistan have responded to the murder of its people in Jafar Express in Balochistan, which had India's fingerprints all over it?
So this Well, why don't you answer my question first, and then we can come to other questions later. Will absolutely we're answer talking your about question because we're talking about the catalyst for what happened in the last 2 weeks was the catalyst of what was the happened here- terrorist attack and murder of 27 mostly Hindu men. And my question is simply, how should India have responded that you would have found acceptable? या ये बीबीसी प्रेजेंटर जिन्होंने इस बीजेपी के स्पोक्सपर्सन के इस एरोगेंट जवाब पर काउंटर क्वेश्चन भी नहीं किया. The government is convinced of the link to Pakistan and to the government of Pakistan. Well, we do have a rather painful history of not needing any proof now, of knowing how many times it's happened. तो इंटरनेशनल एनालिस्ट का क्या ख्याल है, देखिए. The problem is that it's not an equal playing field in terms of presenting narratives. Due to history, due to the famous attack on the hotel in Mumbai, movies that have been made about this. I mean, you can watch these movies while you're taking international flights across the world. Okay, they play on major international airlines. People who are just sitting on an airline looking for a movie might watch, I forget the name, but the movie about the attack on the hotel in Mumbai. I mean, there's no equivalent for Pakistan's perspective. There's no movie on an international flight that shows Pakistan's perspective of Kashmir. In past years, after the BJP took harsher and harsher measures on Indian-administered Kashmir, there was New York Times reporting and a change in narratives about the situation in Kashmir. That wasn't due to the success of Pakistan's messaging. That was due to blunders on the part of India and the fact that there was international media coverage of it. At the end of the day, it barely moved the needle. So it's just not an equal playing field. I think the international media, if you look at it, is more likely to accept India's narrative than Pakistan's narrative due to all kinds of factors, but including history and including some of a hesitancy on the part of Pakistan's leaders to completely disavow some of these anti-India groups. So, and I understand that there's complexities inside Pakistan that might make that difficult to do. So I just don't think it's an equal playing field. It's hard to say who has the better narrative. I will say that neither the international media nor leaders in the West or around the world have. I don't think there's been any statements that said we accept that this attack came from Pakistan, that this attack in Kashmir. I haven't heard one statement that endorses that Indian narrative. It said something like we stand with Pakistan against state-sponsored terrorism. They haven't said something like that. So I actually think. In some ways, in terms of how the event is understood by the leadership of the world, Pakistan's narrative has prevailed a bit in that it wasn't involved in the attacks. Without taking sides or saying one or the other is right, perceptions matter in a crisis. And so from the Indian view, Pakistan started this crisis because India sees Pakistan as having supported the Pahalgam terror attack on April 22nd. My read from what I'm hearing from Pakistani colleagues of the Pakistani perspective is one of two things. Either India actually started this through what Pakistan perceives to be Indian support for militants in Balochistan with the Jafar Express train attack in March, or Pakistan sees India's May 6th strikes on Pakistan as unprovoked because it disavows any association with the Pahalgam attack. Why that matters is who started it dictates who goes last. And if both sides want to settle the score in kind of this tit for tat scenario, if you think that the other guy started the crisis, then you get the last word in and we're even. But from the other perspective, they think you're already even and you are then upping the ante. You really do need an honest broker. You need someone who's trusted by both sides and who also, and I would stress this, has the skills to know how to bring people together. I was in the State Department in 2001 and I watched a consummate diplomat, Richard Armitage at the time, who was the Assistant Secretary of State,
go over and tell Pakistan and India, look, you can't trust, I understand you don't trust one another, but you're going to have to trust me. You're going to have to trust the United States that I keep both sides' feet to the fire, that I make sure that the ceasefire is honored. जाते जाते नुक्ता ऑडियंस के कमेंट्स। बेबी कामी 5690, इस सीज फायर का क्रेडिट ना सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री और एयरफोर्स को जाता है, बल्कि मेरी नज़र में पाकिस्तान की ऑफेंसिव डिप्लोमेसी और मैसेजिंग स्ट्रैटेजी को भी जाता है। और कौम का मूड क्या है, इस कमेंट में देख लें। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज़।